नमस्ते दोस्तों। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए सिर्फ बड़े बड़े वाक्य रटना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की चीजों के सही नाम जानना भी उतना ही जरूरी है। कई बार हम घर के बर्तनों, सब्जियों या रोजमर्रा की चीजों को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भूल जाते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे ही कमाल के डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स, उनके हिंदी मतलब और उनका सही उच्चारण, ताकि आपका वर्ड पावर एकदम मजबूत हो जाए। वीडियो को पूरा देखें, मेरे साथ वर्ड्स को रिपीट करें और चलिए शुरू करते हैं। मसाले, स्पाइसेस, स्पाइसेस। इंडियन फूड इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस। बर्तन, utensils, utensils. Please help me wash the utensils. छिलका उतारना, peel, peel. Can you peel the potatoes? छोटे टुकड़ों में काटना, chop, chop. She is chopping onions for dinner. छलनी, छलनी. Sieve, sieve. Use a sieve to strain the tea. आटा गूंथना, knead, knead. My mother is kneading the dough. सेकना, bake, bake. I love to bake cakes on weekends. निचोड़ना, निचोड़ना. Squeeze, squeeze. Squeeze some melon juice over the salad. कद्दूकस करना, grate, grate. Please grate some cheese for the pizza. चम्मच से हिलाना, stir, stir. Stir the sugar until it dissolves. झाड़ू, broom, broom. Where is the broom? I need to clean. पोछा, mop, mop. She is mopping the floor right now. कचरे का डिब्बा, dustbin, dustbin. Throw the wrapper in the dustbin. धागा, thread, thread. Pass me the needle and thread. कंबल, blanket, blanket. It's cold. I need a blanket. पर्दे, curtains, curtains. Pull the curtains to let the light in. दराज, drawer, drawer. The keys are kept inside the drawer. छत, terrace, terrace. Let's go to the terrace for some fresh air. अलमारी, almira, almira. Put your clothes back in the almira. चटाई, mat, mat. Wipe your feet on the door mat. बाल्टी, bucket, bucket. Fill the bucket with water. नल, faucet, faucet. The kitchen faucet is leaking.
कचरा, garbage, garbage. Don't throw garbage on the road. किराने का सामान, grocery, grocery. I am going to buy some grocery. सीढ़ियाँ, stairs, stairs. Be careful while walking down the stairs. खिड़की, window, window. Please close the window, it's raining. छत, कमरे के अंदर की, roof, roof. The roof needs some repair. तकिया, pillow, pillow. I need a soft pillow to sleep comfortable. कपड़ों की अलमारी, कपड़ों की अलमारी, wardrobe, wardrobe. Clean your wardrobe this evening. चप्पलें, slippers, slippers. Wear your slippers inside the house. तो दोस्तों, ये थे हमारे घर और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कुछ बहुत ही जरूरी इंग्लिश वर्ड्स। आज से ही अपनी बातचीत में इन शब्दों का इस्तेमाल करना जरूर शुरू करें। अब हमेशा की तरह आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आटा गूंथने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।